हेलो गाइस। रात को बज रहा है 1 और अभी एनिमल किंगडम पूरा रिवाइज होगा और फिर हम लोग करेंगे टिश्यू, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट। चलिए शुरू करते हैं। When you look around, you will observe different types of animals with different structures and forms. As over millions species of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. Basis of classification: in spite of difference in structures and forms of different animals, there are fundamental features common to various individuals in relation to alignment of cells, body symmetry, nature of xylem, patterns of digestive, circulatory or reproductive system. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. Levels of organization. Though all the members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. जबकि सारे एनिमलिया का जो मेंबर्स है वो मल्टी सेलुलर है, बल्कि all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell. Same pattern of organization of cell को इंडिकेट नहीं करता, ठीक है. All of them are same but do not indicate the same pattern of organization of cells. ठीक है. All of them are multicellular. For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates. Wait a minute. Although all the members are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates. They exhibit cellular level of organization. तो एनिमलिया में सारे मल्टीसेलुलर है, but all of them जो है do not exhibit the same pattern of organization of cell. For example, in sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates. They exhibit cellular level of organization. Some division of labor activities occur among the cells. कुछ division of labor activities occur होता है cells में. In coelentrates, the arrangement of cells is more complex. coelentrate में more complex organization है cells में. और here the cells performing the same function
Here cells that perform same function are arranged into tissue. Hence it is called tissue level of organization. Still higher level of organization, organ level, is exhibited by the members of Platyhelminthes and other higher phyla, where tissues are grouped together. And form organ. तो Platyhelminthes में organ level system, Coelentrates में tissue level system, और जो sponges है उसमें cellular level of organization है. In animals like arthropods, annelids and mollusks, echinoderms and chordata, organs have associated to form functional system. तो annelid, mollusk, arthropod, echinoderm और chordata जो है इसमें सेल्स ऑर्गन्स जो है एकजुट होकर फॉर्म किया फंक्शनल सिस्टम. ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन. ठीक है, ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल सिस्टम. तो फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्लैटिहेल्मिंथस में has only a single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus, and hence is called incomplete. Complete digestive system जो है उसमें 2 openings होता है, एक mouth और एक anus. Similarly, the circulatory system may be of 2 types. Circulatory system भी 2 तरह के होते हैं, जैसे open type which is pumped out by blood, is pumped out by heart, and the cells and the tissues are directly bathed in it. And closed type in which the blood is circulated through a series of blood vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries. तो closed type क्या होता है? जो blood circulate होता है through a series of vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries. Symmetry. Animals can be categorized on the basis of the symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. Any plane that passes through the center, जो plane से भी पास होता है, does not divide them into equal halves. Equal halves में divide नहीं होता. ठीक है, it is called radial symmetry. Coelentrates, ctenophores and echinoderms have this kind of body plan. तो coelentrate जो है ctenophore और CCE रेडियल सिमेट्री, मतलब जहाँ से भी काटो कोई भी प्लेन से वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे. तो ये सिर्फ है coelentrate, ctenophore और echinoderms में. Animals like annelids, arthropods, where the body can be divided into identical left and right halves only in one plane, exhibit bilateral symmetry. तो इसको bilateral symmetry बोलते हैं. ठीक है, तो ये था symmetry. चलिए अब नेक्स्ट हम डिप्लोब्लास्टिक पढ़ेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. तो बायोलेटरल सिमेट्री कहाँ से है? आर्थ्रोपॉड, एनिलीड और एकाइनोडर्म. उसके पहले जो रेडियल सिमेट्री है वो कौन सा है? वो है CCE, coelentrate, ctenophore और एकाइनोडर्म. अब है डिप्लोब्लास्टिक, animals in which the cells are arranged in 2 embryonic layers. Animals जिसमें जो cells है वो अगर 2 embryonic layer में है, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploblastic animals. Example coelentrates. ठीक है, अगर 2 external layers है ectoderm और endoderm, तो उसको हम
ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। सिलेंट्रेट उसका प्योर एग्जाम्पल है। An undifferentiated layer mesoglea is present in between the ectoderm and endoderm. एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर है मेसोग्लिया बोल के, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में रहता है। Those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, those animals in which the developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, in between the ectoderm and endoderm, is called as are called ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं, जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में वो मेसोडर्म। तो ये प्लैटिहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट्स है। बस नेक्स्ट है सीलोम। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। Body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. जो body cavity mesoderm से line होता है, the presence or absence of cavity between the body wall and the gut wall, जो body wall और gut wall के बीच एक cavity होता है, अगर वो present हो या ना हो उसके बेसिस पे coelom डिसाइड किया जाता है। which is lined by mesoderm is called coelom. Animals possessing coelom are called coelomates. तो जो एनिमल्स पोज करते हैं coelom, उसको हम coelomates कहते हैं। Annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordata and corms। ठीक है, ये सारे हैं coelomate, annelid, mollusk। स्यूडोसिलोमेट कौन है, जिसमें रियल सिलोम के बदौलत स्कैटर पाउचेस में है, उसको हम एस्केमिथिस बोलते हैं। और जिसमें सिलोम टोटली एब्सेंट है, उसको हम प्लैटिहेल्मिन्थस कहते हैं। सिलोमेट का स्ट्रक्चर देख सकते हो एनसीईआरटी में। सिलोम वाइट कलर का होता है पोर्शन, सिलोम देख सकते हो। बीच में एक है स्यूडोसिलोम स्कैटर्ड पाउचेस में है, और सिलोम एब्सेंट एसिलोमेट प्लैटिहेल्मिन्थस। बस लोग खत्म। अब है सेगमेंटेशन। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स with a serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation, and this phenomenon is known as metamerism. In some animal, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition. जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें सीरियल रिपीटेशन हो रहा है of at least some organs. For example, in earthworm, the body shows this pattern called metameric segmentation. The phenomenon is known as metamerism. Here I am notochord. Notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the basis of dorsal side during embryonic development. In some animals with notochord are called chordates, and those animals which do not form this structure are called non-chordates. Example, Polypera to echinoderms. Notochord is mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordates,
and those without notochord are called non-chordates. Porifera to echinoderms and non-chordates. Classification of animals. अब है फाइलम पॉलीफेरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डायग्राम देखेंगे, फिर स्टडी करेंगे. एग्जाम्पल पॉलीफेरा, साइकॉन और यूस्पोंजिया. Spongilla is a bath sponge. Phylum Porifera. Members of this phylum are commonly known as sponges. जो भी इस फाइलम में है पॉलीफेरा, उसको हम स्पॉन्जेस कहते हैं. दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल. ये जनरली मैराइन होते हैं और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं. दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल तो है और इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. Sponges have water transport canal system. Water enters through minute pores ostia in the body wall into a central cavity, spongocell, from where it goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful in gathering respiratory exchange and removal of waste. Waste. Water enters through minute pores ostia in the body wall into a central cavity, spongocell, from where it goes out through the osculum. This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange, and removal of waste. Choanocytes or collar cells line the spongocell and the canal. Digestion is intracellular. The body is supported by a skeleton made up of spicules. The body is supported by a skeleton made up of spicules or spongy fibers. Sexes are not separate. Fertilization. Sexes are not separate. Hermaphrodite. Sexes are not separate. Hermaphrodite. Eggs and sperms are produced asexually by fragmentation. अच्छा, इसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता है फाइलम पॉलीफेरा में. स्पॉन्जेस में choanocytes or color cells line the spongocell and the canal. Or sponges reproduce asexually. Sperm are produced by the same individual. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होता है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट. हो गया. तो choanocytes or collar cells line the spongocell and the canal. Digestion is intracellular. The body is supported by a skeleton made up of spicules or spongy fibers. Sexes are not separate. Asexually, sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Gametes फॉर्म होता है सेक्सुअली, फिर रिप्रोड्यूस होता है. फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस which is morphologically distinct from the adult. Example: siphon, scypha, स्पॉन्जिला, फ्रेशवाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया, बाथ स्पॉन्ज. ठीक है, यहाँ पर साइफॉन फर्स्ट, फिर है यूस्पोंजिया, बाथ स्पॉन्ज और ये है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज. तो जनरली मैराइन होता है. ठीक है. अब है फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में. दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मैराइन, seaside or free living, radially symmetrical animals. The name Nidaria is derived from the word nidoblast or nidocyte. Nidoblasts are used for anchorage.
defense, and for capturing of prey. Cnidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic. They have central gastrovascular cavity. Central gastrovascular cavity है इसमें. Cnidarians exhibit tissue level of organization और ये डिप्लोब्लास्टिक है. आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं हो सकता क्योंकि CCE है, सिलेंटेड टिनोफोर एकाइनोडर्म डिप्लोब्लास्टिक. तो दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, एक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है सेंट्रल में, और फिर उसमें सिंगल ओपनिंग है माउथ ऑन हाइपोस्टोम. माउथ जो है उसको हाइपोस्टोम बोलते हैं. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. तो इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा इंट्रा. सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स एग्जांपल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कुछ इंग्रेडिएंट्स में कोरल्स में जो स्केलेटन है वो कंपोज है कैल्शियम कार्बोनेट से. इंग्रेडिएंट्स एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स. इंग्रेडिएंट दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स को करते हैं जैसे पॉलिप एंड मेड्यूसा. द फॉर्मर इज अ सीसाइल एंड द लेटर. The former is a sessile form like Hydra, Adamsia, and whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like Aurelia or jellyfish. Okay. The former is a sessile cylindrical form like Hydra, Adamsia, whereas later is the umbrella shaped free swimming like Aurelia और जेलीफिश. तो पॉलिप जो है वो सीसाइल है, सिलेंड्रिकल है. उसका एग्जांपल हाइड्रा, एडम्शिया, whereas the free swimming is umbrella shaped and like Aurelia or jellyfish. Those ingredients which exist in both forms exhibit alternate of generation. इट इज़ कॉल्ड मेटाजेनेसिस. इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस. फिर आया पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली. डायग्राम देख लीजिए. ए इज ऑरेलिया, बी एडम्शिया, पॉलिप मेड्यूसा. So again I am reading this phylum Coelenterata. They are aquatic, mostly marine, sessile or free living, radially symmetrical animals. Radial symmetry है. The triploblastic are from Cardiac to chordate. The name Nidaria is derived from the word nidoblast or nidocyte, which contain the stinging capsules or nematocyte present on the tentacles of the body. Nidoblast जो है are used for anchorage, defense and or the capture of prey. Nidoblast जो है used for capturing of defense or prey. Okay. Cnidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic. तो cnidarians जो है वो tissue level of organization मानते हैं और diploblastic. They have a central gastrovascular cavity and intracellular called mouth hypostome. Some of the cnidarians exhibit orals, have a skeleton composed of calcium carbonate. Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. The former is a sessile umbrella and cylindrical form like Hydra, Adamsia, whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like Aurelia or jellyfish. Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation
metagenesis. Polyp produce medusa asexually and medusa produce polyp sexually. The polyp form is Hydra adamsia, whereas medusa is Aurelia or jellyfish. So polyp produce example Aurelia. Coelentrates Physalia, Portuguese man of war, Adamsia sea anemone, Pentatula sea pen, Gorgonia sea fan, Mingrina brain coral. Physalia, Portuguese man of war, Adamsia sea anemone, Pentatula sea pen, Gorgonia sea fan, Mingrina brain coral. Ctenophora example Eurobrachia and Ctenoplana. Ctenophores, commonly known as sea walnuts or comb jellies, are exclusively marine. Ctenophores, commonly known as sea walnuts or comb jellies, are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic, organizing with tissue level of organization. The body bears 8 external rows of ciliated complex which helps in locomotion. Digestion is both extra and intracellular. Bioluminescence is a well-marked in ctenophores. Sexes are not separate. Reproduction takes place only by sexual means. Fertilization is external with indirect development. So अभी तक हम लोग पढ़े पॉलीफेरा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल, indirect development, and इसमें fertilization is external. Reproduction is only taken by sexual means. Eurobrachia, Ctenoplana. So again I am reading phylum Ctenophora. Ctenophora, commonly known as sea walnuts or comb jellies, are exclusively marine, radially symmetrical, diploblastic organism with tissue level of organization. The body bears 8 external rows of ciliated complex which helps in locomotion. Digestion is both extra and intra. Bioluminescence is the property well marked in ctenophores. Sexes are not separate. Reproduction takes place only by sexual means. Fertilization is external with indirect development. Example Eurobrachia and Ctenoplana. Phylum Platyhelminthes. They have dorsoventrally flattened body, hence are called flatworms. अब हम लोग पढ़ेंगे phylum Platyhelminthes. They have dorsoventrally flattened body. इसका जो बॉडी है ये dorsoventrally flattened body है, hence are called flatworms. These are mostly endoparasites होते हैं, found in animals including human beings. तो ये जो एनिमल्स में पाया जाता है ये मोस्टली endoparasite होते हैं, found in animals including human beings. Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic and acoelomate animals with organ level of organization. तो यहाँ से शुरू होता है acoelomate organizing platyhelminthes. आप सबको पता है इसमें जो scattered pouches है ये एब्सेंट है. platyhelminthes से triploblastic शुरू हो रहा है. platyhelminthes से हमारा bilateral symmetry शुरू हो रहा है. Hooks and suckers are present in the parasitic form. Some of them absorb nutrient from the host directly through their body surface. Specialized cells called flame cells helps in osmoregulation. Sexes are not separate. Fertilization is internal and development is through many larval stages. तो पॉलीफेरा में भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल था. फिर हमने क्टिनोफोरा में पढ़ा फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल. और जो हमारा
डाइजेशन इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा है सिर्फ उसमें, और जो पॉलीफेरा में है वो वहाँ पर फ्रैगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन बाई सेक्सुअल बाई गैमेट्स होता है, और ये सिलेंट्रेट्स के लिए तो अलग ही दुनिया वो पॉलिप में हिस्सा करते हैं। एग्जाम्पल ओवेलिया, और फॉर्मर सीसाइल जो होता है वो हाइड्रा एडम्शिया, और जो नर्चर करते हैं मतलब घूमते फिरते हैं उसको हम ऑरेलिया और जेलीफिश कहते हैं। किराया एग्जाम्पल टीनिया, टेपवर्म, फैसियोला लीवर। चलिए फिर से एक बार फाइलम प्लैटिनमिथेस को पढ़ते हैं। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। इनका जो बॉडी है ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic and acoelomate animals with organ level of organization. Hooks and suckers are present in the parasitic form. Some of them absorb nutrients from the host directly through their body surface. Specialized cells called flame cells helps in osmoregulation and excretion. Sexes are not separate. Fertilization is internal and development is through many larval stages. Some members like planaria possess high regeneration capacity. That's it. तो sexes इसमें भी separate नहीं है. Hooks and suckers are present. तो चलिए ये हो गया. Excretion होता है. Help specialized cells called, जिसको flame cells बोलते हैं, helps in osmoregulation and excretion. Sexes are not separate. Sexes separate नहीं होता. Fertilization is internal. फर्टिलाइजेशन इंटरनल और डेवलप पॉलीफेरा से मिलता है फर्टिलाइजेशन, ये याद रखिए पॉलीफेरा से. सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेस हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी. एग्जांपल जो है टीनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लीवर फ्लूक. टेपवर्म ए हैज लीवर फ्लूक बी. टेपवर्म ए, लीवर फ्लूक बी. अब हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एस्केहेलमिंथिस. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एस्केहेलमिंथिस. द बॉडी ऑफ द एस्केहेलमिंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंडवर्म. जो बॉडी है एस्केहेलमिंथिस का वो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है, हेंस द नेम राउंडवर्म, उसका नाम राउंडवर्म पड़ा. दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और पैरासाइटिक इन प्लांट एंड एनिमल हो सकते हैं. ठीक है, तो ये ऑलराउंडर है एस्केहेलमिंथिस. ये याद रखना, एस्केहेलमिंथिस इक्वल्स टू ऑलराउंडर. बॉडी ऑफ एस्केहेलमिंथिस जो होता है वो सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में, हेंस द नेम राउंडवर्म्स. दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. ऑब्वियसली प्लैटिनमिथेस से कोऑर्डिनेट सब कोई बायलैटरल होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीडोसिलोमेट एनिमल्स तो होता ही है. जैसे अगर आप देखें तो सिमेट्री जो है रेडियल सिमेट्री से तीनों का है, बाकी सारे का बायलैटरल है. अगर आप देखें तो उसमें और एक है क्या,
डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो सिर्फ उसमें है सिलेंट्रेट टीनोपोर तक, इक्टोप्लाटियल मिल्किस से साढ़े का ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, सीउडोसिलोमेट आपको पता ही है। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें कंप्लीट है विद द वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स। इसके पास एक मस्कुलर फैरिंग्स भी है। एन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी। एक एक्सक्रेटरी ट्यूब है जो बॉडी वेस्ट को निकालता है फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर। एक्सक्रेटरी पोर भी होता है। सेक्सेस सेपरेट होता है। डायोशियस मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। ऑफ फीमेल्स जो होता है वो लॉन्गर होता है देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज मे बी डायरेक्ट। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट आया। द यंग वंस ओनली रिजेंबल द एडल्ट। इसमें क्या होता है, यंग वंस जो है वो सिर्फ एक एडल्ट को रिजेंबल करता है और इनडायरेक्ट। Example: Ascaris roundworm, Wicheria filarial worm, and Encyclostoma hookworm. The body of Ascaris is circular in cross-section, hence the name roundworm. They may be free-living, aquatic, and terrestrial, or parasitic in plants and animals. Roundworms have organ system level of body organization. राउंडवर्म्स का ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये याद रखना होगा। दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल। बायोलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑल फ्रॉम प्लेटिहेल मिल्किस टू अप टू कॉर्डेट्स। डिप्लोब्लास्टिक only for ciliated stenophores. Okay, then next muscular pharynx. Alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx. An excretory tube removes the body waste from the body cavity through direct excretory port. Sexes are separate. Fertilization fertilization is indirect, is internal, and development may be direct. The young one or indirect. The young ones resemble the adult or indirect. Ascaris, roundworm, Wicheria, filarial worm, and Cyclostoma hookworm. That's it. Annelida. They may be aquatic or terrestrial, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइटिक। ये एक्वाटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, फ्री लिविंग होता है, समटाइम्स पैरासाइटिक भी होता है। मतलब ये पैरासाइटिस की तरह ही ऑलराउंडर है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री भी करता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। मेटामेडिकली सेगमेंटेड बॉडी। मेटामेडिकली सेगमेंटेड बॉडी मीन्स द रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स एंड हेंस द फाइलम नेम एनीलिडा। इसका जो बॉडी है ये डिस्टिंक्टली डिवाइडेड है, हेंस द नेम एनीलिडा। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स which helps in locomotion. Aquatic annelids like Nereis possess lateral appendages. Aquatic annelids जो होता है Nereis possess lateral appendages, that is parapodia, which helps in swimming. तो जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। नेफ्रिडिया, अच्छा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। नेफ्रिडिया इज हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। न्यूरल सिस्टम कंटेंट्स पेयर्ड गैंग्लिया। पेयर्ड गैंग्लिया होता है कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड नेरिस एन aquatic form is dioecious, but earthworm and leeches are monoecious. Reproduction is only sexual.
Example Nereis, Peretima, Artworm and Urodinaria blood-sucking leech. Nereis, Peretima, Artworm and Urodinaria blood-sucking leech. फिर से एक बार फाइलम एनिलिडा वापस पढ़ते हैं. They may be aquatic or free living and sometimes parasitic. They exhibit organ system level of body organization and bilateral symmetry. They are triploblastic, metamerically segmented and coelomate animals. Their body surface is distinctly marked out into segments or metamers, and hence the phylum name Annelida. Anne means annulus, little ring. They possess longitudinal and circular muscles which helps in locomotion. लोकोमोशन में हेल्प करता है. लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल पोज करता है. aquatic annelids like Nereis which possess lateral appendages. Parapodia which helps in swimming. स्विमिंग में हेल्प करता है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है एनिलिडा में. नेफ्रिडिया जो है हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन. तो नेफ्रिडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन. न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. तो पेयर्ड गैंग्लिया से कनेक्टेड है टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ. नेरिस एन aquatic form. नेरिस एक aquatic form है. He is dioecious but earthworms and leeches are monoecious. Reproduction is sexual. Reproduction sexual होता है. Nereis, Peretima, earthworm and Urodinaria blood sucking leech. ये है blood sucking leech. And example of Nereis, Peretima is earthworm. तो एक्सक्रिएशन के लिए नेफ्रिडिया है एनिलिडा में. अब है लार्जेस्ट फाइलम जो कि है फाइलम आर्थ्रोपोडा. दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया. ये एक लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया का. विच इंक्लूड इंसेक्ट्स. इसमें इंसेक्ट्स हैं. Over 2/3 of all named species on Earth are arthropods. 2/3 of all named species on Earth are arthropods. They have organ system level of body organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate animals. ये bilaterally symmetrical animals है, triploblastic है और जो है ये सेगमेंटेड और सिलोमेट एनिमल्स है. सिलोमेट मतलब इसमें जो स्कैटर्ड पाउचेस हैं ये प्रेजेंट है. देयर बॉडी द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपॉड इज कवर्ड बाय चिटिनस एक्सिस्टेंट एक्सोस्केलेटन. इसका बॉडी चिटिनस एक्सिस्टेंट स्केलेटन से कवर्ड है. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन है बॉडी में. They have jointed appendages. Arthros joint. Poda means appendages. Respiratory organs are gills, book lungs और tracheal system. Respiratory जो organs है वो है gills, the book lungs और tracheal system. Circulatory system is of open type. Circulatory system जो है वो ओपन टाइप है. बाकी एनिलिडा में क्लोज टाइप है. सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, compound and simple, statocyst, balancing organ are present. Excretion takes place through malpighian tubules. Excretion जो है excretion वो malpighian tubule से है. They are mostly dioecious. Dioecious होता है मतलब मेल एंड फीमेल अलग होता है. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous. Development may be direct or indirect. Oviparous होता है मतलब outside, may be indirect or indirect. Example, economically important insect
Apis, honeybee, bombyx, silkworm, lacifer, lac insect. Apis, honeybee, bombyx, silkworm, lacifer, lac insect. Vector Anopheles, Culex, Aedes mosquitoes. Anopheles, Culex, and Aedes mosquito. Gregarious pest Locusta, locust. Locusta, locust. Living fossil Limulus, king crab. फिर से फाइलम आर्थ्रोपोडा एक बार दोहरा देता हूँ. दिस इज द largest phylum of Animalia, which include insects. Over two-thirds of all named species on Earth are arthropod. They have organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate animal. ये bilaterally symmetrical organisms है, triploblastic है, segmented है और coelomate animal है. Coelomate animal मतलब इसमें scattered pouches present है. The body of the arthropod is covered by chitinous exoskeleton. Body of arthropod जो है वो chitinous exoskeleton है. The body consists of head, thorax and abdomen. Body में head, thorax और abdomen है. They have jointed appendages. Arthros means joint, poda means appendages. Respiratory organs are gills, good lungs और tracheal system. ये इतना सारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम्स में ओपन टाइप है. सेंसरी ऑर्गन्स जो है लाइक एंटीना, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल. स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. एक्सक्रिएशन जो है वो टेक्स प्लेस थ्रू माल्फिजियन टिब्यूल्स. दे आर मोस्टली गैसियस. Fertilization is usually internal. They are mostly oviparous. Example: economically important insect: apis, honeybee, lacifer, lac insect, vector, Anopheles, Culex, and Aedes mosquitoes. Gregarious pest: locusta, locust. Living fossil: Limulus king crab. तो locust जो है वो ऐसा दिखता है और ये है बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और प्रॉन. Next है phylum Mollusca. This is the second largest phylum, and Mollusca are terrestrial or aquatic, marine or freshwater, having an organ system level of organization. इस जो है Mollusca है ये second largest animal phylum है. Mollusca terrestrial होता है और aquatic, marine और fresh, having an organ system level ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो मॉलस जो है वो टेरेस्ट्रियल होता है और एक्वाटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल. ये हमें पता है. बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल्स एंड इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल आर्म. तो बॉडी जो है वो कैल्केरियस शेल से मतलब डिस्टिंक्ट है. अनसेगमेंटेड विद हेड, मस्कुलर फूट एंड विसरल हम्प. तो हेड, मस्कुलर फूट है और विसरल हम्प है. अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प इज देयर. द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल is called mental cavity, in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory function. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like grasping organ for feeding or radula. बस इतना ही आने ली रहा है. सॉरी, मोलस्का एंड इधर तो पक्का हो चुका. And for mollusca, this is the second largest phylum. Mollusca are terrestrial or aquatic, marine or fresh. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animal. Body is covered. Body जो है वो covered हुआ है calcareous shell से and is unsegmented with the head, muscular foot and visceral arm. Unsegmented है muscular head, मस्कुलर फूट और विसरल हार्म से.
A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. एक spongy layer of skin जो है वो form करता है mantle over a visceral hump. The space between the hump and the mantle is called mantle cavity. तो स्पेस बिटवीन जो hump और mantle है उसको mantle cavity बोलते हैं. In which feather like gills are present. जिसमें feather like gills are present है. They have respiratory and excretory function. इधर respiratory और excretory functions भी है. The anterior head region has sensory tentacles. Anterior head region में sensory tentacles है. The mouth organ contain file-like rasping organ feeding called medulla. Pila focus. They are usually dioecious. इसमें मेल फीमेल होते हैं. With indirect development, example apple snail. Apple snail जो है वो indirect development, एक dioecious and oviporous, मतलब ये outside करते हैं body का और ये indirect development होता है. Example pila, apple snail, pink tada, pearl oyster, sepia, cuttlefish, loligo, squid, octopus, devil's fish, aplysia, sea hare, dentalia, tusk shell, और Chitoleuda chiton. तो पाइला जो है वो एप्पल स्नेल है और पिंक टाडा जो है वो पर्ल ऑयस्टर है. सेपिया कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, सी है ऑक्टोपस, डेविल फिश और एप्लीशिया सी हेयर. डेंटालियम जो है टस्क शेल और चीटोल्यूडा काइटोन. बहुत सारा एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लीशिया सी हेयर, डेंटालियम, टस्क शेल, चीटोल्यूडा काइटोन. ठीक है. तो एक बार फिर से मॉलस्क का दौरा देता हूँ. This is the second largest animal phylum. Mollusca are terrestrial or aquatic, having an organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, and coelomate animals. Body is covered by a calcareous shell and is unsegmented with distinct head, muscular foot, and visceral hump. A soft, spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. The space between the hump and the mantle is called the mantle cavity, in which feather-like gills are present. They have respiratory and excretory functions. The anterior head region has sensory tentacles. The mouth-like region containing file-like rasping organ called medulla is there. They are usually dioecious and oviparous with indirect development. Example pila, pinctada, pila, apple snail, pinctada, pearl oyster, sepia, cuttlefish, loligo, squid, octopus, devilfish, aplysia, sea hare, Dentalium, tusk shell, Chitoleuda chiton. Pila, apple snail. Pinctada, pearl oyster. Sepia, cuttlefish. Loligo, squid. Octopus, devilfish. Aplysia, sea hare. Dentalium, tusk shell, and Chitoleuda chiton. बस. अब है एकाइनोडर्मेटा. These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. Spiny bodied figure. All are marine with organ system level of organization. Echinodermata में सब कोई marine होता है.
ठीक है। एकाइनोडर्मेटा में सब कुछ मैराइन होता है। All are marine with organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical but larvae are bilaterally symmetrical. तो एकाइनोडर्म में जो एडल्ट होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है, बट लार्वा जो है वो बायोलेटरल सिमेट्रिकल होता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल। Digestive system is complete with mouth on the lower ventral side and anus on the upper side dorsal side. The most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. तो the most distinctive feature of echinoderm जो है वो है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन पे, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। An excretory system is absent, sexes are separate, development, reproduction is sexual, fertilization is usually external, development is indirect with free swimming larvae. ठीक है। Sexes separate है, development is indirect with free swimming larva, fertilization is usually external. ओके, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। सिर्फ आपको ये याद रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन अपर साइड, वाटर वास्कुलर सिस्टम which helps in locomotion, capturing and transport of food and respiration. The excretory system is absent, sexes are separate, reproduction is sexual, fertilization is usually separate, fertilization is usually external, and development is indirect with free swimming larva. Asterias, starfish, echinus, sea urchin, antedon, sea lily, cucumaria, sea cucumber, ophiura, brittle star. Asterias, starfish, echinus, sea urchin, antedon, sea lily, cucumaria, sea cucumber, and ophiura, brittle star. तो फिर से एक बार फाइलम एकाइनोडर्मेटा में दोहरा देता हूँ। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles, hence the name Echinodermata. All are marine with organ system level of body organization. The adult echinoderms are symmetrical, but larvae are bilaterally symmetrical. They are triploblastic and coelomate animal. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और सीलोमेट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये इनका कंप्लीट होता है, माउथ ऑन द वेंट्रल लोअर एंड एनस ऑन द अपर, which है the most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture and transport of prey, food and respiration. An excretory system is absent. Sexes are separate, reproduction is sexual, fertilization is external, and development is indirect with free swimming larvae. Asterias, starfish, echinus, sea urchin, antedon, sea lily, sea cucumber, and ophiura, brittle star. Example of Phyla, apple snake, Pinctada, powder star, sepia, cuttlefish, loligo squid, octopus, devilfish, Aplysia sea
हेयर डेंटरियम टस्ट शेल सीटोल्यूरा काइटोन। बस हेमिकॉर्डेटा पढ़ने से पहले आँख में पानी देना ज़रूरी है, नहीं तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा एक बार हम पढ़ लेते हैं। एकाइनोडर्मेटा। These animals have an endoskeleton or calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. So all are marine organ system level of organization. The adult echinoderms are radially symmetrical, but larvae are bilaterally symmetrical. They are triploblastic and coelomate animals. तो ये coelomate होता है। Digestive system is complete with mouth on the lower ventral side and anus on the upper side. The most distinctive feature of echinoderm is the presence of water vascular system, which helps in locomotion, capture and transport of food and respiration. An excretory organ is absent. Sexes are separate. Reproduction is sexual and fertilization is usually external. Development is indirect with free swimming larvae. Example: Asteris, starfish, Echinus, sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumberius, sea cucumber, Ophiura, brittle star. Example of mollusca: Phyla, apple snail, Pinctada, oyster, Sepia, cuttlefish, Loligo, squid, octopus, devilfish, Aplysia, sea hare, Dentalium, tusk shell, and Chitolura, chiton. Now the last is Hemichordata. Hemichordata was earlier considered as subphylum under phylum Chordata. हेमिकॉर्डेटा बोल के कुछ था नहीं पहले, but now it is placed as a separate phylum under non-chordate. तो non-chordates में अभी रखा गया है। Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stromochord, a structure similar to notochord. हेमिकॉर्डेटा का एक कॉलर रीजन में स्ट्रोमोकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर है जो कि पहले नोटोकॉर्ड बोला जाता था।
This phylum consists of worm-like marine animals with organ system level of organization. Worm-like organism होता है, animal होता है. They are bilaterally symmetrical. ये bilaterally symmetrical होता है, triploblastic होता है, and coelomate animal और coelomate animals होते हैं. The body is cylindrical. Body उनका cylindrical होता है and is composed of anterior proboscis, collar and trunk. Circulatory system is of open type. Circulatory system इनका open होता है. Respiration takes place through gills. Excretory organs is proboscis gland. Sexes are separate. Fertilization is external. Development is indirect. Palaenoplus, saccoplus. इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स का बात नहीं है, ये 3 बार पढ़ दूंगा, आपका ये पूरा रेडी हो जाएगा. Hemichordata was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomachord, a structure similar to notochord. Okay, hemichordates have a rudimentary structure in the collar region, hence called stomachord, a structure similar to notochord. The phylum consists of a small group of worm-like animals, marine, with organ system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate. Their body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, collar and a long trunk. Circulatory system is of open type. Respiration takes place through gills. Excretory organ is proboscis gland. Sexes are separate. Fertilization is external and development is indirect. Respiration through gill. Palaenoplus and saccoplus. ठीक है, और ये स्टोमोपॉड बोला जाता था जो कॉलर है. अब है फाइलम कॉर्डेटा. ये बहुत बड़ा फाइलम है. चलिए इसको हम बताएंगे. Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord on a dorsal hollow nerve cord, paired pharyngeal gill slit. These are bilaterally symmetrical, triploblastic coelomate with organ system level of organization. They possess a post-anal tail and a closed circulatory system. ये पोज करता है post-anal tail और closed circulatory system पोज करता है. ठीक है, अच्छे से देखिए. नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स है और पोस्ट-एनल टेल भी है. तो एनिमल्स बिलोंगिंग टू phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord, a dorsal hollow nerve cord, and paired pharyngeal gill slits or paired pharyngeal gill slits. These are bilaterally symmetrical, triploblastic coelomate with organ system level of organization. They possess a post-anal tail and a closed circulatory system. ये closed circulatory system पोज करता है. Comparison of chordates and non-chordates. Chordate में क्या होता है? Notochord present, non-chordate notochord is absent. Central nervous system is dorsal. Central nervous system is ventral, solid and double. अच्छा, central nervous system in chordates is dorsal, hollow and single. Central nervous system is ventral, solid and double. Pharynx perforated by gill slits. Gill slits are absent in non-chordates. Heart is ventral, heart is dorsal. If present, a post-anal tail is present. Post-anal tail is absent in non-chordates.
phylum Chordata is divided into 3 subphyla. phylum Chordata जो है वो डिवाइड है आपका, अच्छा ये ठीक से पढ़िए. Notochord present central nervous system non-chordates is ventral and solid and double. Central nervous system is dorsal, hollow and single. Pharynx perforated by gill slit absent. Heart is ventral, heart is dorsal. Postcentral is present, absent. Notochord present, notochord absent. Central nervous system is hollow, single, dorsal, ventral, solid, double. Pharynx perforated by gill slits absent. Heart is present, heart is ventral, heart is dorsal if present, a posternal tail is present, posternal tail is absent. Next is phylum Chordata. Phylum Chordata is divided into 3 subphyla: Urochordata, Unicata, Urochordata or Unicata, Cephalochordata and Vertebrata. That's it. Urochordata, Cephalochordata, Vertebrata. Subphyla Urochordata and Cephalochordata are often referred to as protochordates. ये जो सबफाइला है यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा, ऑफन इसको प्रोटोकॉर्डेट्स के नाम से भी जाना जाता है एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है. इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल. नोटोकॉर्ड जो है लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, while it extends from head. In cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent throughout their life, और persist करता है throughout life तक. ठीक है, तो सबफाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा जो है आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स. प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन होता है. इन न्यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल. नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है, while in cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent throughout the life. Examples of Urochordata: Acidia, Salpa, Doliola, and Cephalochordata, Branchiostoma, MPCX or Lancelet. Acidia, Salpa, Doliola, ASD. Subphyla Urochordata or Tunicata. Branchiostoma, MPCX or Lancelet. The members of subphylum Vertebrata, Acidia. Members of subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in the adult. Thus, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates, because some often show Urochordata like notochord is present only in larval tail. Cephalochordata it extends from head to tail region and persistent throughout the life. So all chordates are vertebrates. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Besides basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chamber, kidney for excretion and osmoregulation, and paired appendages which may be fins or limbs. Paired appendages which may be fins or limbs. अब जो है बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चन आता है और ये याद रखना भी थोड़ा मुश्किल है. चलिए पढ़ते हैं. वर्टेब्रेटा. एग्नेथा गैनास्टोमाटा. एग्नेथा जो है वो लैक्स जॉ, गैनास्टोमाटा बियर्स जॉ. एग्नेथा क्लास साइक्लोस्टोमाटा, गैनास्टोमाटा सुपर क्लास पाइशेस बियर फिन्स टेट्रापोडा बियर लिम्स. जो पाइशेस है वो फिन्स क्लास ऑस्टिक्थी कॉन्टिक्थिस ऑस्टिक्थिस
or Tetrapoda, limbs class Amphibia, Reptilia, apes and mammals. Class Cyclostomata. Okay. All living members in the class Cyclostomata, Agnatha, Lagstraw, are ectoparasite on some fishes. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. Their body is devoid of scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is of closed type. Cyclostomes are marine but migrate for spawning into fresh water. After spawning within few days they die. Their larvae after metamorphosis return to ocean. So cranium and vertebral column in Cyclostomata are cartilaginous, means it's very soft. So all living petromyzon, lamprey and myxine hagfish. The two examples of Agnatha Cyclostomata, that is petromyzon, lamprey and myxine hagfish. Cyclostoma, all living members of class Cyclostomata are ectoparasites on some fishes. They have an elongated body bearing 6 to 15 pair of gill slits for respiration. Cyclostomes have a sucking and circular mouth without jaws. Their body is devoid of scales and paired fins. Cranium and vertebral column are cartilaginous. Circulation is of closed type. Cyclostomes are marine but migrate for spawning to fresh water. After spawning, within few days they die. The larvae after metamorphosis return to ocean. Petromyzon, lamprey, myxine, hagfish. Next is class Chondrichthyes. They are marine animals with streamlined body and a cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is persistent for the life. The slits are separate and without operculum. The skin is tough, containing minute placoid scales. Teeth are modified placoid scale which are backwardly directed. Their jaws are very powerful. These animals are predaceous and due to absence of air bladder they have to swim constantly to avoid sinking. Scoliodon pristisch. Heart is of two-chambered, one auricle and one ventricle. Some of them have electric organs, torpedo, and some possess poison sting. Trigon, they are cold-blooded poikilothermous animals. They lack the capacity to regulate the body temperature, and in male pelvic fins bear claspers. Internal fertilization, many of them are viviparous. Scoliodon, dogfish, pristisch, shawfish, trigon, stingray, carcharodon, great white shark.
Scoliodon, dogfish, Prestige, shawfish, Carcharodon, great white shark, trigon, stingray. Example of class Cyclostomata, Pectromyzon, lamprey, mixin, hagfish. Again, class chondritic, they are marine animals with streamlined body and a cartilaginous endoskeleton. Mouth is located ventrally. Notochord is persistent throughout life. Gill slits are separate and without operculum. The skin is rough, containing minute placoid scale. Teeth are modified placoid scale which are backwardly directed. Their jaws are very powerful. These animals are predaceous due to absence of air bladder. They have to swim constantly, Scoliodon twistage, to avoid sinking. Heart is two-chambered, one auricle and one ventricle. Some of them have electric organs, torpedo. Some possess poison string, trigon. They are cold-blooded, poikilothermous animal. They have the capacity to regulate the body temperature. Sexes are separate in males. Pelvic fins, bear claspers. They have internal fertilization and many of them are viviparous. Scoliodon, dogfish, Prestige, sawfish, Carcharodon, great white shark, trigon, stingray. Now it is class Osteichthyes. It includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. Their body is streamlined, mouth is mostly terminal. They have four pairs of gills which are covered by operculum on each side. Skin is covered with cycloid or tenoid scale. Air bladder is present which regulates buoyancy. Heart is two-chambered, one auricle and one ventricle. They are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is usually external. They are mostly oviparous and development is direct. Marine exocetus, flying fish, hippocampus, seahorse, freshwater labiodoe, katla, Clarius magur, aquarium, betta, fighting fish, petromyzon, angelfish. So maximum of the example of Osteichthyes. Operculum present on each side. Skin is covered by tenoid or cycloid scale. Air bladder is present which regulates the buoyancy. Heart is of two-chambered. Fertilization is external. Marine exocetus, flying fish, hippocampus, seahorse, freshwater labiodoe, katla, magur, Clarius magur, aquarium, betta, fighting fish, pterophyllum, angelfish. Class Osteichthyes, it includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. Their body is streamlined, mouth is mostly terminal.
They have four pairs of gills which are covered by an operculum. On each skin is covered with cycloid or tenoid scales. Air bladder is present which regulates the buoyancy, and the heart is of two chambered, one auricle, one ventricle. They are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is usually external. They are mostly oviparous and development is direct. Marine exocytus, clownfish, hippocampus, seahorse, freshwater labio-rohu, katla, clarius magur, aquarium betta fighting fish, pterophylla, anglerfish. Class Amphibia. As the name indicates, amphibians can live in aquatic as well as terrestrial. Okay, so let's read one. Scoliodon, dogfish, pristis, shawfish, carcharodon. It will mix up and then you will get long answer. Scoliodon, dogfish, pristis, sawfish, carcharodon, great white shark, trigon, stingray. Electromyzon, lamprey, mixing, hagfish is the example of cyclostomata. Scoliodon, dogfish, Scoliodon, dogfish, pristis, shawfish, carcharodon, great white shark, carcharodon, great white shark, and trigon, stingray. Amphibia. As the name indicates, amphibians can live in aquatic as well as terrestrial and habitat. Most of them have two pairs of limbs. Body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some. The amphibian skin is moist without scale. The eyes have eyelids. A tympanum represents the ear. Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca, which opens into the exterior. Reproduction is by gills, lung and through skin. The heart is three-chambered. They are cold-blooded animals. Sexes are separate. Fertilization is external. They are oviparous and development is direct. Example: buffalo toad, rana frog, hyla, tree frog, salamander, and Ethiopic wingless amphibian. Buffalo toad, rana frog, hyla, tree frog, salamander, Ethiopic wingless amphibian. Class Reptilia. The class Reptilia refers to a creeping or crawling mode of locomotion. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales or scutes. They do not have external ear openings. Tympanum represents the ear. Tympanum. Alimentary canal is into common chamber. Tympanum. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin. Epidermal scales or scutes. They do not have external ear openings. Tympanum represents ear. Limbs when present are two pairs. Heart is usually three-chambered but four-chambered in crocodile. Reptiles are poikilothermals. Snakes and lizards shed their scales as skin cast.
Sexes are separate, fertilization internal, oviparous, development direct. Chilean turtle, testudo tortoise, conure, tree lizard, calotes, grand lizard, crocodile, alligator, hemidactylus, ball lizard, poisonous snake, Naga cobra, Bangarus crate, vipera, viper. Apes, the characteristic feature of apes are the presence of feathers and most of them can fly except flightless bird or ostrich. They possess beak, the forelimbs are modified into wings. The hindlimbs generally have scales and are modified for walking, swimming and grasping on tree branches. Skin is dry without glands except the oil gland. Endoskeleton is fully ossified bones and hollow air cavities, pneumatic. The digestive tract of birds is additional chamber. The crab and gizzard. Heart is chambered 14 chambered. Warm-blooded animals. Homothermous. They are able to maintain constant body temperature. Reproduction is by lung, air sacs connected lungs, abdominal respiration. Sexes separate, fertilization internal, oviparous and development is indirect. Corvus crow, Columba pigeon, testicular parrots, Tuthi ostrich, Pago peacock, Apentotidis penguin, Nephrion vulture. Last is class Mammalia. They are found in variety of habitats, polar ice caps, deserts, mountains, forests, grasslands, dark caves. Some of them are adapted to fly or live in water. The most unique mammalian character is the presence of milk-producing gland, mammalian gland, by which the young ones are nourished. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, or flying. The skin is for the mammals. They have two pairs of limbs. Mammals in unique position here. External ears, pinna are present. Different types of teeth are present in the jaw. Heart is of 4 chamber. They are homothermous. Respiration is by lung. Sexes are separate and fertilization is internal. They are viviparous with few exceptions and development is direct. Oviparous are platypus, viviparous, macropus, pteropus, lympus, camelus, camel, macca, monkey, raptus, rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Icus horse, Delphinus, Baleno, Ptera bluebell, Panthera tiger, Panthera lion, the salient distinguished feature of all phyla under kingdom Maya. That's it for today. Okay, so ये था पूरा एनिमल किंगडम जो कि सिर्फ 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया. अब जो बचा है वो क्वेश्चन करना बाकी है. और समरीन सलीम क्या हुआ है? समरीन सलीम बोलिए. अगर आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो 20-30 नंबर हो जाएगा. हाई यील्ड चैप्टर कीजिए, हाई यील्ड चैप्टर कीजिए.
हाई यील्ड चैप्टर कीजिए समरीन सलीम। वो अभी गारंटी नहीं है। बायो अगर कंप्लीट भी है तो आपको उसमें थोड़ा नंबर कटेगा, लेकिन 300 नंबर से 400 नंबर आ जाएगा। Yes, I am from West Bengal. Okay, bro, Bangalore, Karnataka. Good. Average preparation. Average preparation is going. Adam Shia, Portuguese.
and done for today. Animal Kingdom completely in 2 hours. Okay, so bye bye. It's 3 a.m. and I gave the alarm at 3 a.m. I think, and it should be cancelled now.